वेदर अब हो रहा है चेंज और इस चेंजिंग वेदर के साथ हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हमारा स्किन केयर रूटीन भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। विंटर्स के आने के बाद एक चीज़ जो मेरे लिए चेंज होती है मोस्ट डेफिनेटली इज़ माय फेस मास्क। समर्स में आई डेफिनेटली नीड फेस मास्क दैट आर क्लैरिफाइंग। किसी में हो थोड़ा सा सैलिसिलिक एसिड, थोड़ा चारकोल, समथिंग विच इज़ लाइक अ मड मास्क जो मेरे कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन की हेल्प करे, स्पेशली मेरा टी जोन जो बहुत ऑयली हो जाता है। बट जैसे वेदर चेंज होता है आई जस्ट नीड हाइड्रेशन। साथ ही साथ फेस्टिव सीजन आ रहा है, वी आर ऑल गोइंग टू बी गोइंग आउट, मीटिंग फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। दिस मीन्स अ लॉट ऑफ बाहर का खाना, थोड़ा कम सोना एंड अ लॉट ऑफ फन विच डज टेक अ टोल ऑन योर स्किन। एंड इफ यू वांट योर स्किन टू ऑलवेज बी नाइस एंड मॉइस्चराइज्ड, एक अच्छा सा फेस मास्क बहुत हेल्प करता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे टॉप 5 जिनमें कुछ नए फेस मास्क हैं, समथिंग दैट आई हैव यूज्ड क्वाइट रिसेंटली। एक तो काफ़ी वायरल है, आप सबने देखा होगा, इसका मैं आपको रिव्यू देना चाहती हूँ। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू फेस मास्क, अगर आपका फेस मास्क खत्म हो गया है, यू आर लुकिंग एट बाइंग समथिंग, या आने वाले ब्लैक फ्राइडे में आपको एक अच्छी डील मिलती है, देन यू कैन ऑप्ट इन फॉर वन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू माई टॉप 5 हाइड्रेटिंग फेस मास्क जो आइडियल है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए या ऑल स्किन टाइप्स के लिए जिनकी स्किन कभी भी थोड़ी सी स्ट्रेच्ड या ड्राई फील करती है। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब इफ यू एंजॉय साइंस पैक डेली स्किन केयर कंटेंट, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। वी हैव चैनल मेंबरशिप्स, वी हैव मंथली गिव अवे। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला मास्क जो वायरल वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, आई एम गोना गिव यू माय रिव्यू। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जोसान ग्राउंड राइस हनी ग्लो मास्क, ये वाला। एंड इसे मैंने यूज किया है सिर्फ और सिर्फ 2 बार मैंने यूज किया है। एज यू कैन सी पूरा का पूरा जार अभी भी भरा हुआ है। आई हैव ओनली यूज्ड इट ट्वाइस एंड आई लव्ड इट फ्रॉम द मोमेंट आई पुट दिस ऑन द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले बात करते हैं टेक्सचर की, पहले बात करते हैं फ्रेग्रेंस की। सो ऑफ कोर्स इसमें एक हनी फ्रेग्रेंस आती है। यू गेट राइस, यू गेट हनी, यू गेट हाइलुरोनिक एसिड, यू गेट अ बंच ऑफ हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। दिस इज लिटरली, अगर आप घर पे चावल को पीस के हनी डाल के दही डाल के कुछ बनाएं, दिस उसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा है। इट्स लिटरली लाइक दैट व्हेन यू अप्लाई इट ऑन योर फेस, यू अप्लाई अ थिक पेस्ट एंड इवन आफ्टर 10-15 मिनट्स जो इसका यूसेज टाइम है, ये कंप्लीटली ड्राई नहीं होता, ये थोड़ा सा वेट रहता है। इसे उतारने का ऑप्टिमल टाइम तभी होता है जब ये हल्का सा आपके चेहरे पे गीला हो। इस मास्क को या किसी भी इस तरह के मास्क को कंप्लीटली ड्राई नहीं होने देते। अगर आप कुछ मास्क लगा के करने लग गए एंड इट लेट्स से इट बिकेम कंप्लीटली ड्राई, जस्ट गो अहेड, स्प्रे सम रोज वाटर, उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करके इसे निकालें। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग इट आउट। आई एम टेलिंग यू गाइज, योर स्किन इंस्टेंटली ग्लोज। इस मास्क को लगाने के बाद एक चीज तो मैं एक्सेप्ट करूंगी कि मुझे ऐसा लगा, मैं DIYs इतने नहीं करती हूँ, यू गाइज नो इट, बट कोई जो DIY एक्सपर्ट यूट्यूबर हैं शायद इसका DIY बना सकते हैं विद मे बी लाइक चावल का आटा, कुक्ड राइस, हनी, समथिंग लाइक दैट। बट वो सब आपको नहीं करना, देन दिस वन इज फैबुलस। आई थिंक दिस इज गोइंग टू रियली स्टे इन माई रूटीन थ्रू दिस ईयर, मे बी ऑल थ्रू नेक्स्ट ईयर। मुझे ये बहुत बहुत पसंद आया। In fact, beauty of Josan in general makes really good face masks. I actually love their red bean moong clay mask, which is great if you have oily skin, texture, etc. This is a hydration bomb. Number 1 recommendation. Number 2 recommendation is from Caudalie. So Caudalie का अभी एक नया launch हुआ है in Sephora. It's called the Veno Hydra range, which is quite interesting. तो उसमें आपको ये एक face mask मिलता है. You get one serum, which is like their hydrating, hyaluronic acid, whatever serum. You get 3 moisturizers. Basically, you get a water gel moisturizer. You get like a sort of a mid-strength moisturizer जो super thick नहीं है. And then you get a super hydrating one जो actually dry skin के लिए है. So they've literally created something for oily combination and dry skin. मैंने सिर्फ 2 लिए। आई टुक द ऑयली वन एंड आई टुक द सुपर ड्राई वन। बीच वाला मैंने नहीं लिया बिकॉज Caudalie इज प्रीटी एक्सपेंसिव। आई एम लाइकिंग द मॉइस्चराइजर्स, बट दिस Veno Hydra mask is really nice. This is literally like a moisturizer. It's like applying a thick moisturizer on your face for 10 minutes and you wipe it off. It gives you a beautiful glow. Caudalie के in general products के साथ I think I am falling in love again because ever since I've started buying it, it's been like 4 months. I started with the Veno Pure range. उसका मैंने आपको पूरा रिव्यू दिया था. Now I'm doing Veno Hydra. धीरे धीरे as I'm rediscovering the brand, I'm
sort of falling in love with it, and I really like this face mask. Highly recommended. The third one that I have for you is something जो मुझे initially पसंद नहीं आया था, and for the longest time I was confused about it because sometimes on the internet I feel products get overhyped. Like, and I'm a content creator, so I can't say anything negative about any other content creator. I just feel कि कुछ चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा अच्छा बोल देते हैं, and then when you apply it, you're like, whatever. So that is the Matrigen mask, the Matrigen Peel Off mask. This is the OG glow one. अब इसके बहुत सारे fakes and counterfeits आ गए हैं, but I am talking specifically of Matrigen. ये मैंने order किया था, I believe either from Yes Style या from Amazon Global, I'm not sure. Now ये जब आप लगाते हैं, फर्स्टली अगर आपकी स्किन थोड़ी सी भी ऑयली है, थोड़ी सी भी एक्ने प्रोन है, देन प्लीज 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 स्किप दिस प्रोडक्ट. आप ये दो प्रोडक्ट्स फिर भी लगा सकते हैं. यू कैन यूज द ब्यूटी ऑफ जोसान, यू कैन यूज द कॉटली वन. इसको आप कंप्लीटली स्किप करेंगे. क्यों? क्योंकि व्हेन यू पील ऑफ दिस मास्क इट लीव्स अ बिट ऑफ अ ऑयल कास्ट ऑन योर फेस. दैट्स द कोलेजन व्हाटएवर दैट इज इन दिस, which of course आप उसको मसाज कर सकते हैं, वो चला जाता है, but I just feel that it is something that can definitely flare up an acne situation. तो अगर आपकी skin dry है और acne prone है, then avoid it 100%. But otherwise this Matrigen mask is beautiful. I actually fell in love with it again when I actually used it a few times before I was to go out for an event. तो makeup के पहले मैंने use किया, and I really did feel that like everything was glowy, shiny, बहुत मजा आ रहा था. So this is another one that I recommend. The third one that I recommend, guys, is a product I have been using since 2018-19. इसे मैं बहुत बार इस चैनल में फीचर कर चुकी हूँ. The Peter Thomas Roth Rose Stem Cell. Now I know this brand is a little difficult to get, especially in India. India में Peter Thomas Roth, you can, I forget the name, but there is a website जो क्रॉस बॉर्डर शिप करती है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं. बट अदरवाइज आई नो पीटर थॉमस रॉथ इज टफ टू गेट. बट दिस रोज स्टेम सेल हैज सम काइंड ऑफ अ मैजिक इन इट. I just feel that your fine lines, your everything is like instantly diminished. As you can see, ये वैसे भी ये छोटा था, and ये छोटा ही खत्म ही हो रहा है. And I'm going to order a full size. This is not the full size. ये मैंने प्रोमो में दो लिए थे, hyaluronic acid plus rose. So I got 2 small sizes. I'm going to order the jumbo Jagunda size because I absolutely love it. Rose is one of my most favorite skincare ingredients. Put it in anything, I'm willing to try it. And the Rose Stem Cell Gel Mask is absolutely fabulous. This is something so gentle, so fabulous, you can use it daily. And finally, a product I'm going to tell you about, and I think you should be very careful while buying it because इसके भी बहुत सारे fakes, बहुत सारे counterfeits आ गए हैं, is the viral Biodance. मैंने जो इनिशियली खरीदा था when I had to do my test video for Instagram, जहाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा था. Since then I have bought it 3 times. एक पैक में you get about 4 masks. So I've bought it 3 times. So ये और ये वाला चल रहा है. So let's say in the last couple of months I've had these 12 masks, and I cannot tell you how much I love and adore this. The only downside is this is an overnight mask. 3-4 घंटे में भी काम हो जाता है. If you're gonna pop it on during the day and take it off, अगर आपके पास वो टाइम है आप कर सकते हो. But this is an overnight mask. इसके साथ सोना is a bit of a learning curve, but I'm absolutely blown away by the results every time I like it. Yes, it doesn't do much for your pores and texture, but whatever it does in terms of hydration, because let's understand, and collagen के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ. While collagen cannot penetrate deep into your skin for the anti-aging impact, it is one of the best moisturizing ingredients, and that is what this product gives you. The viral Biodance, it's an OG. इसके भी बहुत fakes आ रहे हैं, so shop carefully. So guys, these were the top 5 hydrating face masks. Some are new, some are old. These are the ones that I've been using and loving. Which one do you love? क्या आपके पास मेरे लिए कोई recommendations हैं for hydrating face masks? Then definitely leave it for me in the comments. I would love to try it. Video पसंद आई, helpful लगी, do consider subscribing. I will see you tomorrow in a brand new video. Till then, take great care of yourself. Question का जवाब देना मुझे comments में. Thank you so much for watching. Bye.